Today we explain a numerical which is related to Nernst equation for electrode potential. Numerical first is related to NCERT. We write question first, which is NCERT. Question is calculate the potential of hydrogen electrode in contact with a solution whose pH is 10. Question is calculate the potential of hydrogen electrode in contact with a solution whose pH is 10. इस क्वेश्चन में एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्ञात करना है और यह जो है वैसे विलयन के संपर्क में है जिसका पीएच मान 10 है। अब यहाँ क्या लिखेंगे देखिए, वी राइट हेयर pH is equal to 10 according to question. Here we write E H plus half H2 is equal to what? This indicate electrode potential of hydrogen electrode. We know that standard potential of hydrogen electrode is equal to 0. We calculate number of electrons during the electrode reaction and concentration of hydrogen ion is what we write. We write N is equal to what? Concentration of hydrogen is equal to what? And electrode potential of hydrogen is equal to what? इस क्वेश्चन में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्ञात करना है और इसको ज्ञात करने के लिए इस रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए गए हैं उसको खोजना पड़ेगा। इसके बाद जो है आपको कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन खोजना पड़ेगा, अर्थात हाइड्रोजन आयन का सांद्रण इस विलयन में कितना है। देखिए, तो हम पहले यहाँ हाइड्रोजन आयन लिख दिया, एरो दे करके H2 कर दिया। अब बैलेंस करने जा रहे हैं। देखिए, यहाँ 1 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 है, इधर भी 1 होना चाहिए, तो यहाँ 1/2 लिख दिया। 2 2 कर जाएगा, 1 हाइड्रोजन इधर भी हो जाएगा, इधर भी हो जाएगा। अब आवेश को बराबर करते इस पर एक धन आवेश है, इधर को देखिए, इधर 1 पॉजिटिव चार्ज है, इधर कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं, इस साइड में कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है। पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेंगे, तो न्यूट्रलाइज करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन इधर ऐड कर देंगे। 1 पॉजिटिव चार्ज इज न्यूट्रलाइज बाय 1 नेगेटिव चार्ज एंड लेफ्ट हैंड साइड चार्ज इज न्यूट्रल। द वैल्यू ऑफ N in the reaction is 1. Here we write therefore N is equal to 1. Now we calculate concentration of hydrogen ion in the solution. We write here formula
concentration of hydrogen ion is equal to 10 to the power minus pH. It is a formula. Here we write the value of pH in the question. The value of pH is 10. Therefore, here we write 10 to the power minus 10. This indicates concentration of hydrogen ion in the solution. Now we write formula of electrode potential. Here we write E is equal to E naught minus 0.0591 by N log 1 by concentration of ions. We write here the formula change in the term of hydrogen electrode. Here we write E H plus upon half H2. This indicates hydrogen electrode potential. Here we write E naught and here we write H plus upon half H2. This indicates a standard electrode potential of hydrogen minus 0.0591 upon N log 1 upon concentration of hydrogen ion. We put in the form of hydrogen. Here we write. Now we write H plus upon half H2 is equal to, here we write 0 in the solution. E naught H plus half H2 is equal to 0 minus 0.0591 upon 1 in the solution. The value of N is 1. I log 1 upon 10 to the power minus 10. The value of hydrogen ion in the solution is 10 to the power minus 10. We write again E H plus upon half H2 is equal to minus 0.0591 log. This part move upper and converted into positive charge. Therefore, we write log 10 to the power 10. Here we write E H plus upon half H2 is equal to minus 0.0591 into this 10 move here. We write 10 log 10. Now we will write here the value of log 10. We write E H plus by half H2 is equal to minus 0.0591 into 10 into 1. The value of log 10 is 1. Therefore, we write answer here H plus upon half H2 is equal to minus 0.591 volt. It is the answer of the question. We write second question.
Next question we write question second is calculate the potential. We write calculate the potential of a zinc ion electrode in which the zinc ion activity is 0.001 m. The value of a standard electrode potential of zinc is equal to minus 0.76 volt. It is equation. Question asked calculate the potential of a zinc ion electrode in which the zinc ion activity, it is concentration, activity is 0.001 m. E naught Zn ion upon Zn is equal to minus 0.76 volt. Now we explain the solution. Here we write E Zn ion upon Zn is equal to what? This indicates the potential of a zinc ion electrode. Here we write E naught Zn ion upon Zn is equal to minus 0.76 volt. It is a standard electrode potential of zinc electrode. It is a concentration of zinc ion. Here we write Zn2 plus AQ is equal to 0.001 m. We explain. We remove the decimal point in the digit. Decimal point move here. Therefore we write 1 into 10 to the power minus 3. दशमलव 3 अंक जो है दाईं ओर मूव कर रहा है, इसीलिए यहाँ 10 टू द पावर माइनस 3 m लिख दिया हमने. अब आगे हल करके छोटा कर देते हैं. वी एक्सप्लेन in short 10 to the power minus 3 m. Now we calculate the value of n is equal to what? First of all, we calculate the number of electrons during the electrode reaction. First of all, here we write Zn ion and Zn. We write here AQ and here S. In left one Zn atom, in right one Zn atom, both side equal. Here no positive charge, here one positive charge. We remove here two positive charge. We remove two positive charge. Therefore here we write 2E. 2E neutralize two positive charge and converted into neutral. इधर जो है दो पॉजिटिव चार्ज है, तो दो पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए दो नेगेटिव चार्ज होने चाहिए. इसीलिए इधर दो इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया गया है. दो नेगेटिव चार्ज जो है दो पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दिया है. इसीलिए इधर भी न्यूट्रल हो गया और इधर भी. यहाँ n का वैल्यू देखिए 2 आ गया है, ठीक, जो वहाँ n बराबर वाट लिखा है हमने. अब फार्मूला यूज करेंगे. वी राइट फार्मूला
E is equal to E naught minus 0.0591 by n log 1 बटा में ए क्यूब हो गया। देखिए इसी को लिखेंगे। अब इस फार्मूले को जिंक इलेक्ट्रोड के टर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो हेयर वी राइट ई जेड आयन अपॉन जेड इज इक्वल टू ई नॉट जेड आयन अपॉन जेड माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ जेड ion. We write. Now we put the value of a species. Here we write E Zn2 plus by Zn, which is calculated. The value of E naught Zn2 plus by Zn is minus 0.76. We write minus and again we write 0.0591 upon the value of n in the solution is 2. Therefore here we write here log 1 upon 10 to the power minus 3. Now we write again E Zn ion upon Zn is equal to minus 0.76 minus 0.0591 by 2 log 10 to the power plus 3. If 10 to the power minus 3 go upper, the sign change and converted into positive. Here we write E Zn ion upon Zn is equal to minus 3.76 minus 0.0591 upon 2. These 3 move here. Therefore we write 3 log 10. We write again Zn ion upon Zn is equal to minus 3.76 0.0591 upon 2 into 3. We put the value of log 10 which is 1. Now we write again zinc electrode. We write again zinc electrode. We write minus 0.76. We multiply 3771.0 upon 2. We write Zn electrode minus 0.76. We divide 0.085. Now we add and get answer. It is answer.